अस्सलामुअलैकुम तलबा तलिबात। बायोलॉजी का कल 10 क्लास का एग्ज़ाम है जो कि थोड़ा मुश्किल और टफ़ एग्ज़ाम हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी। आपने पेपर देने से पहले आज ही इन सवालात को एक दफ़ा नज़र डाल लेनी है ताकि आपके ज़हन नशीं हो जाए, और अगर आप इन सवालात को भी कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह 70 to 80% मार्क्स के साथ इस पेपर में कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं उन सवालात की जानिब, और आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपनी बुक पर मार्क कर लें। तो चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं जो कि स्टार्ट का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन ज़रूर कर लेनी है। डिफाइन होम्योस्टेसिस, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, डिफाइन एक्सक्रीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड guttation, what is general pelvis, what are collecting ducts, what is nephron, define lithotripsy, define dialysis, what are the causes of stone formation in kidney, describe any two causes of kidney failure, what is Bowman's capsule, write two reasons of kidney stone, what is tubular secretion, what is urinary system। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह इसमें से 90% शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लें। राइट टू methods of dialysis in detail and write a note on structure of nephron। नेफ्रॉन की डायग्राम बना देंगे आप तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का ये चैप्टर है जिसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, डिफाइन कोऑर्डिनेटर्स विद एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, व्हाट इज नर्व इंपल्स, डिफाइन पेंक्रियाज, व्हाट इज मायोपिया, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई, डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, डिफाइन रिसेप्टर्स, define melon sheath, what is paralysis, write down its causes, who defines spinal cord, define night blindness, what is endocrine system, what is meant by brain stem, what is epilepsy, what are meninges, write down its two function, difference between aqueous humor and vitreous humor, write the names of neurons talking part in reflex, why does solitary impulses is called jumping impulse। लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिए। राइट अ नोट ऑन नर्व सेल और न्यूरॉन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, राइट द नेम ऑफ फंक्शन लॉब्स ऑफ सेरिब्रम, राइट डाउन द नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, राइट नोट ऑन फोरब्रेन। इसी के साथ चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट जिसमें से आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन हाइलाइन एंड फाइब्रस कार्टिलेज, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, how lower jaw is different in mammal from other lower vertebrate, also give its advantage, difference between compact bone and spongy bone, what two minerals are found in bones, difference between movement and locomotion, what is skeleton, right one merit, what are hinge joint, give its one example, difference between tendons and ligaments, what do you know about osteoarthritis, describe upper and lower jaw in mammals and vertebrate, what is joint, what do you know about movable joints, define arthritis and define insertion। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। describe difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis, define joint, describe its different types, what is skeleton, explain its components of human skeleton, what is bone, describe its structure, define arthritis and describe its type। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि चैप्टर नंबर 14 है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ बर्डिंग अकर्स इन corals, explain parthenogenesis with example, how plant reproduce by suckers, give example, what is cloning, define multiple fee and difference between the two method of pollination, difference between self pollination and cross pollination, what is reproduction, name its two basic type, give two disadvantages of vegetative propagation, difference between apigeal germination and hypogeal germination, how binary fission take place in invertebrate, give an example, define endospores, give an example, define alternation of generation in plants, write the full name of STD। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब 4 different ways of natural
Vegetative propagation, write a note on development and structure of seed. What is seed germination? Explain the coordination of seed germination. Describe the advantages and disadvantages of vegetative propagation of plant. Next chapter जो है chapter number 15 inheritance. Short question है what is theory of special creation? Name nitrogenous bases found in DNA molecule. Difference between homozygous genotype and heterozygous genotype. State the law of segregation. Define homologous chromosome. What is inheritance? What are nucleosomes? What is recombinant DNA? Define the Mendel's law of independent assortment. What is meant by natural selection? Also give an example. Define continuous variation. Give source of variation. Difference between transcription and translocation. Define codominance. Give an example. Define incomplete dominance. Give an example. Define natural selection. Define artificial selection. Differentiate between breeds and varieties or cultivators. इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 3 है. Describe structure of DNA. Describe the Mendel law of segregation and Mendel law of independent assortment. Chapter number 16 है man and his environment का short question है. Describe food chain and food web. Define acid rain. How biotechnology has helped us in improving the environment. What is meant by decomposers? Give an example. Difference between population and community. What is a biological nitrogen fixation? What are the 2 effects of acid rain? Define deforestation. What is meant by gentrification? What is global warming? Define predation. Define species. Write down the 2 disadvantages of excessive denitrification. Define ecosystem. Define urbanization. What is greenhouse effect? And give the name of 2 important greenhouse gases. लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसी चैप्टर्स के. What is global warming? Describe its causes and write a note on carbon cycle. Chapter number 17 biotechnology. Short question. What is biotechnology? Define continuous fermentation. Define fermentation. What is fermenter? What is single cell protein? What is alcohol fermentation? What is lactic acid fermentation? How biotechnology has helped us to improve the environment. Give 2 objectives of genetic engineering. Write down 4 uses of formic acid. How human growth hormones was obtained before genetic engineering. Define vector. लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लें. Describe basic steps in genetic engineering. Describe the advantages of using fermenters. Discuss the role of biotechnology in field of फूड मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 18 फार्मेकोलॉजी का. चैप्टर नंबर 18 में से शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफाइन फार्मेकोलॉजी. व्हाट आर टेट्रासाइक्लाइन? गिव एन एग्जांपल. व्हाट आर सीडेटिव? गिव एन एग्जांपल. व्हाट आर सिंथेटिक ड्रग्स? व्हाट आर hallucinogens? राइट अबाउट ड्रग्स obtained from plant. What are pharmaceutical drugs? What is heroin? What is its effect on CNS? For what purpose vaccines are used? Explain drugs from animals. Difference between antibiotics and disinfectants. What are narcotics? And write down its 2 uses. Difference between pharmaceutical and addictive drugs. What are sulfa drugs? Write down its 1 use. Difference between bacterial and bacteriostatic antibiotics. Define vaccine. What are addictive drugs? Define antigen and antibodies. इसी के साथ इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि है व्हाट इज मेंट बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ये थे 10th क्लास के बायोलॉजी के गेस्ट पेपर 2022 के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है. आपने एक नज़र इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़रूर देनी है. अल्लाह ताला आप तमाम तलबा व तालिबात को कल के इम्तिहान में आसानियाँ फरमाए और हमेशा कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनाए. आमीन का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. इसी के साथ लास्ट तक वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.